बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 27 सितंबर 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के UNGA के 78वें सेशन से खिताब की। शॉर्ट सा खिताब था, 17 मिनट कुछ सेकंड्स का खिताब था। अब आप सोच रहे होंगे कि खिताब 17 मिनट का था तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा तवील क्यों है। इस वीडियो में सिर्फ खिताब नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर शामिल, आगे चलकर आपको बताऊंगा। बेसिकली जो सुब्रमण्यम जयशंकर का खिताब था वो घूम रहा था, अपनी न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे सुब्रमण्यम जयशंकर। G20 समिट के बाद जो भी प्रेशर आया भारत पर आपको मालूम है, तो उसको ज़्यादातर जो खिताब का हिस्सा है उसमें G20 का जो डिक्लेरेशन था उसको जस्टिफाई किया कि यूक्रेन की मजम्मत क्यों नहीं की भारत ने, उसको जस्टिफाई किया सुब्रमण्यम जयशंकर ने। और कुछ हिस्से में मीठी मीठी धमकियां वेस्ट को भी लगाई और कनाडा को भी बगैर नाम लिए सुब्रमण्यम जयशंकर ने जो मीठी मीठी वार्निंग्स दी वो भी आपको सुनवाऊंगा। स्टार्ट कैसे किया भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने, जैसे स्टार्ट किया वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सुनो, उसके बाद बात करते हैं। Distinguished members of the General Assembly, Namaste from भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत। सुब्रमण्यम जयशंकर ने जिस तरह से स्टार्ट किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था उनका स्टार्ट। जो व्यूवर्स भारत से हैं उन्हें मालूम होगा कि किस तरह से भारत के अंदर, मैं आपको बता दूं कि एक बहस चल रही है नाम को लेकर, मुल्क के नाम को लेकर, कि भारत है, इंडिया भारत दोनों हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया और भारत दोनों हैं, ये बहस बनती नहीं है। जैसे पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब एक जमात आ जाए इन फ्यूचर और वो मारने धाड़ने लग जाए आपको कि आप पाकिस्तान नहीं कहेंगे, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहेंगे, तो इसी तरह की बहस भारत के अंदर ये जो मोदी सरकार है इसकी वजह से बनी हुई है। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने एक बार फिर से मैसेज दे दिया उन लोगों को, उन पार्टियों को, या फिर भारत के उन अवाम को जो कि इंडिया के नाम को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर ये कहते हैं कि भारत इंडिया दोनों होना चाहिए। सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने इस खिताब के अंदर इंडिया का लफ्ज़ भी मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल किया, और इख्तिताम में क्या इस्तेमाल किया, क्या लफ्ज़ बोला अपने मुल्क के नाम को लेकर, वो भी आपको बताऊंगा। सुब्रमण्यम जयशंकर ने स्टार्ट किया कि मैं जनरल असम्बली के सदर को मुबारकबाद देते हुए 78वें इजलास के थीम एतमाद की तामीर नौ और आलमी यकजहती की बहाली की हिमायत करता हूँ। ये मौका है कि हम अपने अहदाफ और ख्वाहिशात शेयर करते हुए दरपेश चैलेंजेस और कामयाबियों का जायज़ा लें। इस तनाज़र में भारत के पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। जनाब सदर, दुनिया इंतशार के एक गैर मामूली दौर से गुजर रही है। अदम मसावात और गैर मसावी तरक्की ने ग्लोबल साउथ पर बोझ डाला है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि कोरोना वायरस, तनाज़ात और टेंशन्स ने इस बोझ को मज़ीद बढ़ा दिया है, इसलिए समाजी और इक्तिसादी तरक्की का पहिया रुक गया है। पायदार तरक्की के वसाइल को चैलेंजेस का सामना है। बहुत से ममालिक मौजूदा ख़राब हालात से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर अब यहाँ पर आ गए मुद्दे पर, जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं वो मुद्दे पर आ गए, जस्टिफाई करने पर आ गए। अपनी न्यूट्रलिटी को, G20 का जो डिक्लेरेशन था उसको जस्टिफाई करना स्टार्ट किया है यहाँ से सुब्रमण्यम जयशंकर ने, और तकरीबन इख्तिताम हो गया था उनके खिताब का। और वो अपनी न्यूट्रलिटी को और G20 समिट के डिक्लेरेशन को जस्टिफाई ही करते रहे। ये गुफ्तगू सुनिए। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इस मौके पर भारत ने इस गैर मामूली जिम्मेदारी के साथ G20 की सदारत की कि एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के विजन था। इस जो G20 समिट हुआ भारत की सदारत में न्यू दिल्ली के अंदर, इसका विजन था एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल। तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इस इजलास में चंद ममालिक के मफादात की बजाय बहुत से ममालिक के कलीदी खदशात पर तवज्जो देने की कोशिश की गई। यानी कि सिंपल मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम जयशंकर कहना चाह रहे थे कि यूक्रेन जंग को हमने हाईजैक नहीं करने दिया, बल्कि बहुत से ममालिक के कलीदी खदशात पर तवज्जो दी है हमने इस G20 समिट के अंदर। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि द डेज व्हेन अ फ्यू नेशंस सेट द एजेंडा एंड एक्सपेक्टेड अदर्स टू फॉल इन लाइन आर ओवर। वो दिन गुजर गए कि जब कुछ ममालिक एक एजेंडा सेट किया करते थे और बाकी जो है लाइन में लग जाते थे, वो दिन चले गए। वेस्ट को मैसेज दे रहे थे कि मल्टीपोलर हो चुकी है दुनिया, ताकत का कोई एक मरकज़ नहीं रहा। बहुत मीठी लैंग्वेज में, बहुत मीठे अंदाज में सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस तरह से ये बात की है, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The days
when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. गुफ्तगू आपने सुनी सुब्रमण्यम जयशंकर की, जिन्होंने अपने खिताब के आगाज में अपनी न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश की और G20 समिट के डिक्लेरेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वो कहना ये चाह रहे थे कि तनाज़ात, टेंशन्स तो हैं दुनिया भर के अंदर, जंगें भी हैं, लेकिन इन तनाज़ात, टेंशन्स और जंगों की वजह से जो ब्रॉडर इम्पैक्ट आ रहा है, जो रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर इन जंगों की वजह से, वो मसाइल ज़्यादा बड़े हैं। अब जंगें, तनाज़ात, कितने ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, 2, 4, 10, 12, 20, लेकिन पूरी दुनिया पर जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं इन जंगों की वजह से, उनको हमने उन पर तवज्जो देने की कोशिश की G20 समिट के अंदर। बाकी कोई मकसद नहीं था, यूक्रेन को इग्नोर करना मकसद नहीं था, रशिया की जानिब भारत का टिल्ट जो है वो मकसद नहीं था, बल्कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर नेक नियति के साथ पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दे रहे थे। अब दुनिया के मसाइल तो छोड़ दें, अपने मुल्क के अंदर जो आपके मसाइल हैं उन पर आप किस तरह से तवज्जो दे रहे हैं और किस तरह से आपने, कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने G20 समिट के अंदर आकर ये मुद्दा उठाया। ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो बल्कि जो बाइडन ने भी ये मुद्दा उठाया और खामोशी के साथ जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनसे ये मामला उठाया, जो खालिस्तान वाला मामला था, जो लीडरशिप को जिस तरह से दूसरे ममालिक में जाकर इनकी एजेंसी जिस तरह का सलूक उनके साथ कर रही है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, ये मुद्दा उठाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भारत की जानिब से रशिया की जानिब टिल्ट दिखाना, अब भारत ये जस्टिफाई कर रहा था कि मैं रशिया की जानिब टिल्ट नहीं दिखा रहा था, यूक्रेन के खिलाफ होना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि मैं तो ब्रॉडर इश्यूज को हाईलाइट करना चाह रहा था, ब्रॉडर इश्यूज को तवज्जो देना चाह रहा था उनके ऊपर, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन खैर G20 समिट के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर भारत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन ब्लॉक है, उनकी जानिब से G20 समिट के बाद अभी तक भारत इज़ फेसिंग द म्यूज़िक। इस वजह से जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे अपनी पोजीशन को, और साथ मीठी मीठी सी वार्निंग्स भी दे रहे थे वेस्ट को। जैसे उन्होंने कहा कि द डेज व्हेन अ फ्यू नेशंस सेट द एजेंडा, जब कुछ नेशंस एजेंडा सेट किया करती थी, वो दिन चले गए, मल्टीपोलर हो चुकी है दुनिया। अब इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए मिलजुल कर। अक़वाम मुत्तहिदा खुद कॉमन ग्राउंड्स तलाश करता है। सुब्रमण्यम जयशंकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लेटफॉर्म है वो भी कॉमन ग्राउंड्स तलाश करता है ना, कि तमाम जो ममालिक हैं, तमाम जो नेशंस हैं, उनकी बात सुनी जाए, कॉमन ग्राउंड पर आया जाए। दूसरों को सुनना और इनके नुक्ता नज़र का एहतराम करना कमज़ोरी नहीं है, ये सुब्रमण्यम जयशंकर कह रहे हैं, बल्कि ये ताउन की बुनियाद है और ऐसे ही आलमी मसाइल पर इज्तमाई कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। कमज़ोर तबके की तरक्की पर तवज्जो देने के पहलू पर हमने G20 का आगाज़ किया। फिर से आगे G20 पर मैंने आपको बताया कि G20 को ही जस्टिफाई करते रहे और अपनी न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई करते रहे कि किसी की जानिब टिल्ट नहीं है, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स भी ठीक है और क्वाड भी ठीक है, दोनों का मेंबर भारत है। एक अमेरिका लेड अलायंस है और दूसरा जो है वो रशिया लेड अलायंस है, चाइना लेड अलायंस है। तो दोनों की तारीफ की और दोनों को ज़रूरी करार दिया। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि G20 समिट के अंदर हमने 125 ममालिक के खदशात को शामिल किया। नतीजा ये निकला कि वो मसाइल जो बैनुल-अक़वामी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, इन्हें बराबरी तवज्जो मिली। यानी कि यूक्रेन का जो तनाज़ा है, जो ज़्यादा मुस्तहिक था बैनुल-अक़वामी तवज्जो का, वो दरमियान में इन तनाज़ात जो हमने जिक्र किया, जिन इशूज़ का, उनके बराबर उसे तवज्जो मिली। इससे बढ़कर बातचीत के ऐसे नताइज बरामद हुए जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए अहम हैं। यानी कि G20 समिट का जो आलामिया था, जो डिक्लेरेशन था, वो बिल्कुल न्यूट्रल था। उसमें यूक्रेन हो, चाहे इंसानी जो मसाइल हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, वो तमाम के तमाम इक्वल थे। वहाँ पर यूक्रेन प्रोमिनेंट नज़र नहीं आया। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि अफ्रीकन यूनियन को हमने शामिल कर लिया G20 के अंदर, एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को हमने आवाज़ दे दी। बहुत अहम रहा G20 का समिट और इस बात को हमें
समझने की ज़रूरत है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि तमाम कौमें अपने कौमी मफादात को तरजीह देती हैं, लेकिन हमने इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर भारत अपने कौमी मफादात को तवज्जो दे रहा है और रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई साइड ले रहे हैं, किसी ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं, बल्कि हम अपने कौमी मफादात पर तवज्जो दे रहे हैं। और हम हर कौम इसी तरह करती है, अपने जो कौमी मफादात हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उन पर तवज्जो देनी चाहिए तमाम ममालिक को। तो इसमें ब्लॉक की लड़ाई बीच में सुब्रमण्यम जयशंकर के कहने का मतलब था कि ब्लॉक की लड़ाई खेलना बंद करो और हमारे जैसे जो ममालिक हैं, जो न्यूट्रल हैं, अपने कौमी मफादात को देखते हैं, उन्हें रगड़ना बंद कर दो। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से होने की हैसियत से और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी होने की हैसियत से उन्होंने भारत की अचीवमेंट्स गिनवाई कि पड़ोसी ममालिक जो हैं, श्रीलंका की मदद के लिए हम सबसे पहले पहुंचे, हमारी जो वैक्सीन है कोरोना से लड़ने के लिए वो भी दीगर ममालिक तक जो है वो सबसे पहले पहुंची। तो भारत जितना बड़ा है उसे पता है कि उसकी जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुद्दे को लेकर हमने आपके कहने पर बैठ नहीं जाना कि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर बैठ जाएं। फिर कनाडा को बगैर नाम लिए सुब्रमण्यम जयशंकर ने क्या पैगाम दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, all nations pursue their national interests. We in India have never seen that as being in contradiction with global good. When we aspire to be a leading power, this is not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility and make more contributions. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. गुफ्तगू आपने सुनी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर की, जिन्होंने बगैर नाम लिए कनाडा को मैसेज देते हुए कहा कि इलाकाई सालमियत और दूसरों के अंदरूनी मामलात में दखल ना देने को मखसूस मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सियासी सहूलतकारी, दहशतगर्दी, वायलेंस और एक्सट्रीमिज़म के रद्दअमल का तयन नहीं कर सकती। नाम नहीं लिया और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज सुब्रमण्यम जयशंकर की जानिब से नहीं दिया गया, बल्कि एक लेक्चर देने की कोशिश की कनाडा को बगैर नाम लिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज तो खैर भारत देने की पोजीशन में नहीं है। अब भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने UNGA की इस तकरीर के बाद अमरीका के अंदर एक फोरम पर गुफ्तगू करते हुए सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। भारत की जो टोन है, जो कनाडा वाला मामला है, जो खालिस्तान वाला मामला है, जो सिख बरादरी के खिलाफ जिस तरह की ज़बान स्पेशली गोदी मीडिया यूज़ कर रहा है, तो उस तरह की ज़बान जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से अब यूज़ नहीं की जा रही, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि सबूत कनाडा के पास हैं। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो वायलेंस है, ये जो एक्सट्रीमिज़म है आपके ममालिक के अंदर, चाहे आपका अपना मुल्क है, हम दखल नहीं दे सकते, लेकिन आप इसे इस तरह के मकासद के लिए, मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम ताउन के लिए तैयार हैं अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद हैं। जो भी सिख जो लीडर हैं उनके कत्ल का जो मामला है उसमें अब भारत ताउन के लिए तैयार हो चुका है। सुब्रमण्यम जयशंकर इख्तिताम किया उन्होंने अपने खिताब का कि अगले साल अक़वाम मुत्तहिदा समिट फॉर डेमोक्रेसी मुनक्किद करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की तोसी समेत तब्दीली, इंसाफ और मल्टीलैटरलिज्म के फ़रोग़ के लिए इसे एक संजीदा मौका समझकर काम करना चाहिए। हमें एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के विजन के साथ इन चैलेंजेस से निमटने की ज़रूरत है। ये शॉर्ट सा खिताब था सुब्रमण्यम जयशंकर का, जिसके 2 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि एक तो G20 को, अपनी न्यूट्रलिटी को जस्टिफाई किया सुब्रमण्यम जयशंकर ने, और फिर मीठी मीठी सी वार्निंग्स वेस्ट को और कनाडा को बगैर नाम लिए मीठी मीठी सी वार्निंग सुब्रमण्यम जयशंकर की जानिब से दी गई। और फिर UN को दरख्वास्त की, UN से दरख्वास्त की भारत ने, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने, कि ये दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो चुकी है। अब कुछ ममालिक, कुछ जो नेशंस हैं वो डिक्टेट नहीं कर सकती, वो किसी को एजेंडा नहीं बता सकती, और दूसरों से एक लाइन में लगना, एक्सपेक्ट करना
अब बंद कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मैसेज जो है, एक अच्छे वे में इसी तरह मैसेज दिया जा सकता था कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, मल्टीपोलर हो चुकी है, ताकत का एक मरकज नहीं रहा। और अब भारत से भी अगर अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लाइन में लग जाए अमेरिका के कहने पर, तो भारत लाइन में खड़ा नहीं होने वाला। इस किताब के अंदर, इस तकरीर के अंदर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान को जिस तरह की बातें वो किया करते हैं हर साल भारत की जानिब से इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, वो बातें इस मरतबा नहीं थी। और जो गोदी मीडिया है वो इसे इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान बड़ा परेशान है, भारत ने घास ही नहीं डाली कश्मीर को, कश्मीर तो कोई मामला, कोई तनाज़ा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर उसका जिक्र ज़रूरी नहीं समझता भारत। अब इस प्लेटफॉर्म पर भारत की जानिब से कश्मीर का जिक्र ना करके एक और पैगाम पाकिस्तान को दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर का जिक्र तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। जब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने खिताब किया, काकड़ साहब ने, तो उन्होंने मसला कश्मीर उठाया और उस पर राइट ऑफ रिप्लाई में भारत ने क्या कहा और फिर पाकिस्तान ने राइट ऑफ रिप्लाई में क्या कहा। दोनों क्लिप्स में वीडियो के लास्ट में दोनों क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, वो दोनों क्लिप्स आप सुन सकते हैं जिसमें कश्मीर को लेकर भारत ने क्या कहा और पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं, मिस ना कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। First, I call on the representative of India. Thank you, Mr. President. I take the floor to exercise my delegation's right of reply to the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of JNK and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. My delegation is obliged to exercise its right of reply in response to the statement just made by India. What we have heard from India is pure political fiction. Let me list the lies. First, Jammu and Kashmir is not part of India. It never was and never will be.
Just ask the people of Jammu and Kashmir. The Security Council done just that. It has decided that the final disposition of Jammu and Kashmir will be decided by its people through a UN-sponsored plebiscite. India accepted the Security Council resolutions. It is obligated to implement them under Article 25 of the UN Charter. It has failed to do so through fraud and force. Instead, India has sought to suppress Kashmiris' demand for their right to self-determination and freedom by imposing a cruel occupation. Since 1989, over 100,000 Kashmiris have been martyred. On 5 August 2019, India gave up all pretense and announced annexation of Jammu and Kashmir. It enlarged its occupation army to 9 lakh, imposed a complete lockdown, turning the beautiful valley of Kashmir into the largest open-air prison in the world. The entire Kashmiri population is the victim of India's brutal tactics. Innocent Kashmiris are killed routinely in fake encounters and cordon and search operations. Collective punishments are imposed with the destruction of entire villages and neighborhoods. The entire Kashmiri political leadership remains incarcerated. 15,000 Kashmiri boys have been abducted, many disappeared and tortured. An information blackout has been imposed by closing media houses and charging independent journalists with terrorism. Indeed, a classic colonial settler project is underway. And yet, the oppressed Kashmiris have not capitulated. They have not given up their demand for freedom from Indian occupation. At all political celebrations, they fly a flag of Pakistan, not India. They cheer the Pakistani cricket team and they shout, Pakistan Zindabad, long live Pakistan. India may forcibly occupy the land of Kashmir, but it has lost its people forever. The second lie is to describe the Kashmiri freedom struggle as terrorism. This is a familiar colonial ploy. Under international law, Kashmiri's resistance to foreign occupation is just and legal. It is India's occupation that is illegal. It is India which must be held accountable for its war crimes and human rights violation in the occupied territory. The 2 reports of the UN High Commissioner for Human Rights documented these crimes and violations. Over a dozen special rapporteurs of the Human Rights Councils have called for the investigation of human rights violation in Jammu and Kashmir. India has consistently denied them access to the occupied territory. The third Indian lie is to portray itself as a victim of terrorism. On the contrary, India is a serial sponsor of terrorism. It has perpetrated terrorism against each one of its immediate neighbors. Now, India's terrorist franchise has gone global. Pakistan has solid evidence of Indian sponsorship of Tehreek-e-Taliban Pakistan, which has carried out repeated terrorist attacks against Pakistani civilian and military targets. The BLA, Baloch insurgent, is also financed and operated by India. The captured Indian spy and naval commander Kulbhushan Yadav has fully enumerated India's terrorist activities in his confession. India must be held accountable for its terrorist activities. Mr. President, if a government is capable of brutally persecuting its own people, one can imagine what it is capable of doing to the people of other nations. The BJP RSS government, which has ruled India since 2014, is guilty of imposing a reign of terror not only against the people of Jammu and Kashmir, but also against its own 200 million Muslims, 2 million Christians, and millions of Dalits and other low-caste Hindus. India's crimes are well documented. These include pogroms in Gujarat, Mumbai, and Delhi, the frequent lynching of Muslims by cow vigilantes, the bulldozing of Muslim houses and shops, hate speech including calls by political leaders and Hindutva priests for genocide against Muslims. In orgy of Islamophobia, Muslims are forcibly converted
or disenfranchise, bans imposed on the hijab, love jihad laws adopted, and hundreds of mosques, including the Babri Mosque, have been destroyed in the campaign to obliterate Muslim and their cultural heritage, the very legacy of India. In the first 8 months of 2023, 525 attacks alone took place against Christians, including the recent inhuman massacre of Christians by Hindu tribes in northeast India. Since 2018, 1 lakh cases of crimes were registered against Dalits. Thousands of Sikhs were killed at the Golden Temple in organized raids in 1984 and thereafter. Mr. President, India will not halt these human rights violations of human rights and international law until sense of impunity is removed. The world must stop giving India free pass for strategic reasons. I thank you.